I wouldn't just do corporate law or just do one kind of dispute. और वो एक फंक्शन इस चीज़ का है कि हमारे पास adequate judges नहीं है, adequate infrastructure नहीं है. And mind you, they are not just disagreeing on whether he should get death or life. Supreme Court judges ने acquit किया है लोगों को. Like Oscar Wilde says, and I keep quoting it, that I never let formal schooling interfere with my education. एक growing concern है कि अपील बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. मतलब अब जो cases बहुत नीचे level पे solve हो जाना चाहिए, like people are going, just appealing and moving ahead. The law's understanding is power. We can disagree in the court, but without being disagreeable. In law, things are not going to happen overnight. A blockbuster overnight success is not a law thing. Welcome to Crox with Socks, Mr. Bharat. How are you? How's it going? Thank you for having me. How's your back? Like you've been struggling with it. Not really struggling with it. I don't lead as active a lifestyle as I should. The law is a very, very exacting profession. Right. So yeah. What, you were playing football? I was playing football, but the irony is that I didn't get injured during the football. It would have been a more bearable, a more glamorous sort of an injury if I got injured there. So we got done with the game. And so this is something that we do in the chambers, are the lawyers and the interns there. Every weekend we try to sort of get together, either do a law quiz or go play football or cricket. None of us are professionals. We are very, very bad. So we played the game, and then I came back and then I started working on a document. I just stood up and I realized something was wrong. It took a few days to sort of get over that. I think this is a sign that yeah. Thank you for that very comforting thing to say. Well, but with football, like I was listening to a podcast, I think, where you were giving an analogy around how football plays in your life. Like, is it something you've always enjoyed as a kid? Oh yes. Which team do you support also? I don't watch as much. I try to play more. I think that's also got to do with the narcissism of wanting to be the center of the attention yourself instead of being a spectator and being on the lines. I've enjoyed football. I think the analogy that I must have spoken of was what is the judge's role in, and maybe we'll get to that as we go along on what a judge does. So it's an easier metaphor to sort of explain the referee, the player, and not an umpire. So it's easy to contrast it with cricket, where the umpire is standing in one place and calling people out, and a referee is somebody who's running with the parties and telling them this is something that you've done right, this is something that you've done wrong. Obviously, something that you've done wrong, never the right. So when I say this is how a young judge should be, not an umpire and a referee, I think you should be more proactive. You should run with the parties and try to call them out and not be afraid of sending people off the field if they are not playing by the rules. So maybe in that sort of perspective, I must have spoken of it. Makes sense. I was reading this book, which is on the table, called Range by David Epstein. You've read the book, you've told me. How it starts off is a story and a contrast between Tiger Woods and Roger Federer. Tiger Woods is somebody जिनके father ने बहुत early on deduce कर लिया कि अच्छा, my son is a prodigy. अगर 10,000 hours लगाएंगे, he would be the best golfer of all time. And there was on the other side Roger Federer, who played tennis, who did skateboarding, football. I think he did every sport with the ball. And his mother was a professional tennis teacher and a coach, but she would never coach him. Kya disappoint karega, mujhe nahi coach karna hai. And he turns out to be one of the best of all time in tennis. और ये दोनों जो बुक का वो है, रेंज मतलब नाम है कि कैसे आप अगर एक जर्नलिस्ट हैं अपने लाइफ में, आप कैसे एक स्पेशलाइज वर्ल्ड में ट्रायम्फ करेंगे. And I think like how your mother says it all the time, that you're jack of all trades. Would you call yourself a journalist? I think yes. Obviously, I wouldn't say I've done particularly well in one way or the other, but that's been the endeavor. And I'm not a journalist if I think of it now. It was a very interesting question. I never thought of it that way. I would be a journalist because I can bored very easily with things. So I can't do the same thing over and over again. So I'll pick up, I'm reading multiple books at the same time. Or I'll take up, I practice law, of course. But then I'll also take up something to do with teaching or writing or something different. And that's what keeps me interested. I wouldn't just do corporate law or just do one kind of disputes. We'll do a murder case in the morning, then a arbitration in the afternoon, and then a tech dispute. Just keeps it interesting. And I think
And again, to each his own. I'm but not here to preach on what anyone should be. It's a personal call at the end of the day. Some people may be very passionate about only a specific discipline that they want to narrow down on and do it, and that gives them fulfillment. I mean, all in good. But I personally feel in certain disciplines, being a journalist is better and makes you more effective as a professional. And I think that's what the author argues in the book, that in certain kind of environments, being a specialist may be more helpful, but in certain environments which are more dynamic, where there are too many variables, there are other external actors which you cannot foresee. There, being a journalist and your ability to sort of join the dots across disciplines, across subject matters, across experiences, makes you a more effective person. I personally feel that law is one such discipline with so much strategy, with so much interconnection between finance, for instance, and this case that you're contesting. Or, for example, you're briefly talking about criminal law, a murder case. A lot of a murder case is also psychology, right? Is also genetics, is also why people do what they do, what are their childhood experiences, what are the sort of traumas that they've gone through which made them do what they've done. So somebody who's just doing criminal law, looking at a section and saying, yes, this is a murder, or this is a culpable homicide, or whatever, may not be as effective sometimes as opposed to somebody who can also bring in psychology, who can also bring in sociology, who can also bring in how the human mind works. Obviously, you don't need to dig deeper to the extent you become a neuroscientist yourself. You won't be able to ever manage that if you're practicing law. But having a broad understanding of all of this is super helpful and makes life more interesting on the whole. Sorry for that very meandering answer. No, it's all right. Lawyers loves captive, I think captive audience and an open-ended question. This is the whole point of a podcast. Like, you can go as much as you want to. पर जो मैंने जनरल टेंडेंसी देखी है हमारे सोसाइटी में, कि मान लीजिए अगर आपको एक जर्नलिस्ट बनने का प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ फिट हो रहे हो, और द बेस्ट वे टू डू इज टू सैम्पल इट, कि अच्छा मैं ये करके देखता हूँ, फिर वो करता हूँ. पर उस पर एक जो ताना कसा जाता है वो ये कि अरे मान लीजिए मैंने इसको स्विमिंग में डाला, इसको स्विमिंग छोड़ दी इसने, अरे मतलब पैसे वेस्ट हो गए. या फिर इसको मैंने एक हॉबी क्लास में आर्ट में डाला, ये मतलब एक कॉस्ट तो इनहेरेंट उसके साथ जुड़ा ही हुआ ना, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं करोगे ये चीज़. आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे टू एक्सप्लोर, नो, कि छोड़ दो, देखो कहाँ जा रहा है, और इवेंचुअली फिगर आउट हो जाएगा. लाइक हाउ आर योर पेरेंट्स विद इट? लाइक दे ऑलवेज अलाउड यू टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर? I've been very fortunate that way, actually. My parents were never too controlling. वो helicopter parents नहीं थे. एक तो वो नहीं थे, वो उस तरह के लोग हैं. दूसरा ये था कि unfortunately dad fell ill when I was very young. So when I was 6, father had a major brain hemorrhage and a stroke. So in any event, he was not around. He was in the hospital for a very long time, then recuperating. So bedridden in a lot of ways. तो डैड और मॉम तो एक तरह से उसी जद्दोजहद में लगे रहे टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो ओकेजन भी इतनी नहीं थी टू बी माइक्रो मैनेजिंग व्हाट द किड्स आर डूइंग, कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, कौन सा ऑप्शनल ले रहे हैं, किस हॉबी क्लास में जा रहे हैं. इनफैक्ट ऑल ऑफ दोज वर लग्जरीज टू स्पीक ऑफ इट. बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड था हमारे लिए, तो मतलब वी कुडंट थिंक ऑफ इट बिकॉज एट वन पॉइंट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंड्स मीट. तो वो एक रीजन था that the parents never got sort of actively involved in it, and that's also the kind of people that they are. I mean, although बहुत ज़्यादा conventionally पढ़े लिखे नहीं हैं, for example mom, but very modern in their outlook in the sense कि यार autonomy है बच्चे की भी, or maybe at some point we commanded that sort of trust कि यार we could be left to decide and हम कोई बहुत ख़राब decision नहीं लेंगे. तो बहुत चीज़ें इनफैक्ट मैंने एक्सपेरिमेंट करी, बट अगेन करियर वाइज क्योंकि फादर साहब लॉयर थे और मुझे लॉ शुरू से ही पसंद था बहुत, तो ये था कि हाँ लॉ, जजशिप, राइटिंग, टीचिंग, इससे रिलेटेड ही कुछ करना है. बट उसमें भी मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए. माई एंटायर करियर ओवर द लास्ट 12 years इज अ टेस्टिमनी टू हाउ मच एक्सपेरिमेंटेशन आई हैव डन. तो आई मीन एग्जैक्टली सैम्पलिंग इज द वे. लाइक आपने बोला नहीं मैं करके देखता हूँ सारा कुछ जो भी लॉ में अवेलेबल, आई विल गिव इट अ शॉट. पर क्विकली आई वांट टू टच, जब फादर साहब बेडरिडन हुए, उनको हुआ एक बहुत ही, मुझे किसी ने बताया था जब आई वाज ग्रोइंग अप कि जिम्मेदारियां ली नहीं जाती हैं, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती हैं, ली जाती हैं. हाउ क्विकली यू रियलाइज कि मुझे अब जिम्मेदारी लेनी है, एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, लाइक हाउ, व्हेन डिड यू कॉन्शियसली रियलाइज, क्योंकि 6 साल तो बहुत यंग एज है, व्हेन डिड यू रियलाइज कि हाँ अब हो गया है, लाइक आई हैव टू स्टेप अप एंड
look up to things? I was 6 when this happened. और वो बड़ा distinctly मुझे याद है जिस दिन ये इंस्टेंस हुआ. हम सुबह, मैं और मेरी, I've got a sister 4 years elder to me. तो हम जब सुबह उठे, used to stay in this 1.5 BHK house. So my mother and father were not there. That is what you're used to as a kid, waking up to your mom and dad, or at least mom. Dad अगर गए भी है बाहर तो. But I woke up to my aunt sitting there, and the aunt said कि हम उठे, mom ने उठाया, rubbing her eyes, getting up. She says, if I remember correctly, something on the lines of कि हाँ पापा को जाना था कहीं तो साथ में गए हैं. She didn't tell me immediately. Because at that point, it wasn't clear whether he would survive or not. तो immediately तो बच्चों को बताना नहीं था. तो उस मोमेंट में ना कुछ लाइफ में, इफ आई लुक बैक नाउ, वो कहते हैं ना दैट एक्सपीरियंस वाज व्हाट मेड मी हु आई एम. तो आई थिंक दैट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप एट 6 AM एंड माय चाची टोल्ड मी कि यार डैड मॉम नहीं है, इट मेड मी हु आई एम फॉर गुड और फॉर बैड और व्हाटएवर, राइट. वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव था. ऑब्वियसली उस समय आप शुरू करते हो प्रोसेस करना, इमीडिएटली नहीं हुआ. एंड व्हेन यू आर प्रोसेसिंग दैट एट दैट पॉइंट, I was also shaped in a lot of ways. This is something very personal. I don't know if I've spoken about it to a lot of people. When I went to meet my father after a few days, he was in the hospital. So my dad told me, and with the best of intentions, I mean, he didn't intend to hurt me or anything. He said, "यार परेशान मत कर, तेरी वजह से हुआ है," something like that. Now when I look back and I try to join the dots, that impacted me a lot. Because at that point I thought that I'm responsible. यार मैंने गलती करी है. हुआ क्या था, उससे एक इवनिंग पहले मैंने फादर साहब को कहा था मुझे यार यही वाला सूट लेना है. आई वांटेड टू बाय अ 3-piece. आई स्टिल रिमेंबर, डार्क ब्लू कलर. वी हैड टू गो टू अ वेडिंग एंड मीन्स वर वेरी लिमिटेड एट दैट पॉइंट. कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे. बट मैंने कहा मुझे यही खरीदना है. मैंने बड़ी जिद करी डैड से कि मुझे यही लेना है. और उन्होंने ऑब्वियसली रेजिस्ट किया, बट देन ही फाइनली गेव इट. अब आई वाज अ वेरी रिजिड एंड स्टबर्न किड. तो वो मैंने ले लिया. बट व्हेन आई लेटर रियलाइज, यार वो हमारे मीन्स में बिल्कुल नहीं था. वो 1,000-1,700 रुपये का सूट उस समय जब हमारा महीने का किराया 1,500-2,000 था. तो मैंने जिद करी उस पर. मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि यार मेरी वजह से हुआ है. मैंने डैड को ना स्ट्रेस दिया था, मैंने उनको परेशान किया उस इवनिंग पे, इस वजह से ये हो गया. और इसीलिए जब मैं अस्पताल उनसे मिलने गया तब उन्होंने वो ये बात मुझसे कह दी. तो मेरे जहन में ये बात बैठ गई. मेरे जहन में जब ये बात बैठ गई, मुझे लगता है यार अब मुझे कुछ ठीक करना है, मुझे अब इसको ना कॉम्पनसेट करना है. ये मेरी वजह से डैड को ये परेशानी हुई है एंड नाउ आई हैव टू गिव बैक. तो ये, और बच्चे बड़े रिजिडली एक बिलीफ को पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लेते हैं फिर. तो मैंने उस बिलीफ को पकड़ लिया. मैंने कहा यार ये अब मुझे ना, अब मेरे ऊपर ही है. आई गॉट अ सिस्टर, आई गॉट मॉम तो इज अ होम मेकर, तो किसी को चलानी है चीज़ें. तो उस दिन से ना मेरा ओरिएंटेशन शुरू हो गया. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आनी शुरू हो गई. डैड घर पे भी जब आ गए अस्पताल से, तो भी मैं ना रात को कई बार उठ को उनको देखता था कि इफ इज ब्रीदिंग राइट, with your stomach gently rising up and I relate to it. So I would look at him. Many kids do that actually because they are worried about losing parents. But there was a greater fear because dad अभी आए थे. तो उस समय से शुरुआत हुई और फिर मैंने पढ़ना काफ़ी शुरू किया. I think 8-10 साल की उम्र में, और in fact 7-8, I took to books like Nobody's Business. Dad also was a reader. तो थोड़ा कल्चर तो किताबों का था ही. बट मुझे पता लगा यार कोई सैल्वेज अगर है ना इस दुनिया से और इस गुर्बत की ज़िंदगी से, तो वो किताबें हैं, वो नॉलेज है. तो 10 साल मेरे को याद आ गया फिर कि सेकेंड हैंड बुक मार्केट, लाइब्रेरी, इधर उधर मैं बड़ा जाना शुरू कर दिया. 13-14 साल की उम्र तक आते आते फिर मैंने कहा यार ये स्कूल जो है ना बड़ा अननेसेसरी एक्सपेंसिव है मेरे पेरेंट्स की मीगर फाइनेंसेस पे. डैड ने थोड़ा सा रिकवर कर लिया था उस समय तक, बट मुझे लगा यार दिस इज़ अ लग्जरी दैट आई कैन डू विदाउट. तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल एजुकेशन में ना वो था नहीं विश्वास. मुझे क्लास में भी बैठा होता था, कॉल इट एरोगेंस और व्हाटएवर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. मुझे लगता है दिस नॉट गोना ऐड वैल्यू. मतलब आप मेरे को ये पढ़ा रहे हो थियरम और ये पढ़ा रहे हो कि ये इस साल में हुआ था, व्हाटएवर, दिस नॉट गोइंग टू ऐड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वैल्यू टू माई लाइफ. तो एक डिसडेन शुरू से ही था. सो एज ऑस्कर वाइल्ड सेज, एंड आई कीप कोटिंग इट, दैट आई नेवर लेट फॉर्मल स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन. मुझे फॉर्मल स्कूलिंग नहीं, उल्टा और हर कुछ दिन बाद हमें टीचर्स भी बुला लेते थे, कहते फीस नहीं दी आपने. एक बार मेरी बहन को बुला लिया हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने, कहते आपकी फीस नहीं आई. आई आस्क माई प्रिंसिपल द क्वेश्चन कि यार मैं तो देखो काम करता नहीं, मेरे माँ बाप भी देंगे फीस, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ रहा हूँ, आपके मुझसे पैसे की बात ना करें आप, मेरे पेरेंट्स से कर लें. और उस दिन मुझे याद है मैं उठ के स्कूल से बाहर आ गया था. वेरी अथॉरिटेरियन प्रिंसिपल बैक इन द डे. मैंने दरवाज़ा खोला, मैं आ गया. माई सिस्टर्स लुकिंग एट मी कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये जस्ट वॉकड आउट ऑफ द स्कूल
as somebody of 12 years, 11 years, you're not expected to walk out of the school like that, right? I walked out of the school in more ways than one. और 13, 14 में फिर मैंने छोड़ ही दिया स्कूल. मैंने कहा यार मैं किताबें पढ़ लूँगा और अपने स्पेस पे पढ़ूंगा और अपने जो चीज़ें मुझे पढ़नी है, जो मुझे शौक है, मुझे शुरू से ही शौक था यार साइकोलॉजी पढ़ें, शौक था कि यार सोशल साइंसेस पढ़ें, लॉ पढ़ें. तो मैंने सोचा वो पढ़ूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, तो ज्वाइन कर लिया. अब मैं थोड़ा सा एट दिस पॉइंट उत्कर्ष विल हैव टू हेल्प मी, वेयर डिड वी स्टार्ट ऑफ एंड व्हाई डिड आई एंड अप हियर? वेरी लॉन्गिश टेल. We started off asking कि journey की जब जो impact हुआ, your father साहब got bedridden. What transitioned into you know, being कि अब I need to step up and take. वही step up में leaving would also be another pillar नहीं कि यार घर में मैं देख रहा हूँ कि situation ठीक नहीं है, so I should leave schooling. ये important factor था या फिर जब principal ने fees की बात की तो ज़्यादा भारी weightage क्या लगा आपको? ये भी मैं ना फिगर आउट कर रहा हूँ एज वी स्पीक इन अ लॉट ऑफ वेज. प्राइमरी फैक्टर यही था कि मुझे लगता था यार ये वर्थ इट नहीं है. लिमिटेड है फाइनेंसेस, दोनों बहन भाई पढ़ रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नॉट ओनली सेव फाइनेंसेस, ऑल्सो सपोर्ट द फैमिली. स्कूल फीस तो एक पार्ट है, बाकी वी ऑल्सो हैव टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस, गिव सम कम्फर्ट टू द फैमिली, सोचना ना पड़े 10 बार एक चीज़ को लेके. तो इसीलिए मैंने जब छोड़ा स्कूल तो काम भी साथ करना शुरू कर दिया. तो वो wanted to support the family. That was the primary consideration. Of course, ego may be also be a part of it. That how could the principal say that to me? I mean, this is unfair. So I've always had that, and to just connect one more theme with it, always had that very very fierce sense कि यार injustice नहीं होना चाहिए, unfair नहीं होनी चाहिए बात. तो शुरू से ही मेरी vocabulary में यही था कि यार ये गलत है, ये inequal है. 7-8 साल का एक उम्र की मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ. फादर साहब ने मुझे कुछ कहा, मुझे अनफेयर लगा. मैंने फादर साहब को कहा क्यों अपनी उम्र के किसी से लड़िए जाके, मुझसे आप क्यों लड़ रहे हैं? हमारे अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है ना. मेरी सारी जिंदगी आप पे डिपेंडेंट है. मैं 8 साल का हूँ, आप 40 के हैं, आप अपने बराबर वाले से लड़िए. मैं तो आपको जवाब भी नहीं दे सकता. पर उस टाइम भी रियलाइजेशन थी कि मतलब हम भी इक्वल नहीं है और ये क्या कहते हैं, इक्वालिटी की फॉर सम रीजन रियलाइजेशन थी. अब पता नहीं मैंने कहाँ से उसको पिकअप किया, क्योंकि फादर साहब वकील थे, तो लॉयर इज डीलिंग विद इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, राइट, डीलिंग विद इश्यूज ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, डिस्क्रिमिनेशन. तो वहीं से पिक कर लिया. और फादर भी इसी शब्दों का इस्तेमाल करते थे ना. अब क्लाइंट को आप एडवाइस कर रहे हो, कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हो, क्योंकि मैं कोर्ट भी जाता था उनके साथ. तो आई मस्ट हैव पिक्ड इट अप समवेयर. And obviously, all of his anger dissipated in a moment, and he said, "Yeah, this is my 8-year-old challenging me on Article 14 and right to equality." ये जो अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना, ये बहुत कुछ लोगों में इनेट होता है. और मुझे लगता है वो लोग चल के दे पिक अप लॉ एंड बिकम लॉयर्स इन दैट. स्टैंडिंग अप टू एन इंस्टीट्यूशन और फीलिंग कि मुझे दबाया जा रहा है, मैं नहीं दब सकता हूँ. आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल, सो आई हैड वेरी सिमिलर एक्सपीरियंसेस. लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड माई लॉ एंड it leads you to, I think, a place where जहाँ पे आप अपने आप को बैक कर सको, और लॉ वो डिग्री बैकिंग देती है आपको मेंटली भी और इन द सोसाइटी एज वेल. सो आई रिमेंबर बोर्डिंग स्कूल में भी इफ वी हैड टू गो टेक परमिशन फॉर वॉचिंग लेट नाइट फुटबॉल मैचेस या कुछ भी, आई लाइक चल ना मैं लेके चलता हूँ. लाइक आई वुड गो टू द हेड मास्टर, टॉक अबाउट इट. और माई पेरेंट्स नेवर केम फ्रॉम, मतलब लखनऊ से थे, तो मैं इकलौता ही, ऐसे 2-3 लोग थे जो यूपी से हिमाचल पढ़ रहे थे. So my parents would be like, it's too far. So I started going alone when I was early. I would take the train, come back, do everything by myself. So I would do all sort of things. I'll stand up against the teacher. I would, reply, answer back, which is conventionally not right. क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो मैं तो, I would not answer back. That was the norm. And they would be like, bring your parents जब आएंगे. Sure. And my parents never came. That was very fortunate. But I relate to it कि अगर आप अपनी, पर वो बहुत अच्छी फीलिंग भी है जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप उसको यूटिलाइजेशन उसकी आप समझते हो बेटर तौर पे. दैट रियली हेल्प्स टू स्टैंड फॉर द कॉज यू वांट टू एंड योर ओपिनियंस एंड यू आर समबडी हु इज नॉट अ पुश ओवर, एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, आई थिंक. नो, so completely agree. It gives you or empowers you on 2 levels. One is you understand how and why the system works the way that it does. क्यों कुछ लोग दूसरों को ऑपरेस कर पाते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन से सिस्टम्स हैं, वो कौन से पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जिससे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो एवरीवन वुड हैव बैकिंग ऑफ सम लॉ ना, और अ प्रिटेंस ऑफ सम लॉ. एंड हाउ डू यू चेक इट? सो इट गिव्स यू द टूल किट टू होल्ड पीपल टू अकाउंट, राइट?
even one insignificant person is can compete with the highest and the mightiest, right? The rule of law, howsoever high you may be, you're not above the law. So law's understanding is power. It's and that also possibly very important point on why a certain kind of people take up law. So for example, I personally have had the feeling of not mattering. यार वजूद नहीं है यार, आवाज़ नहीं है, बताओ आप क्यों में खड़े हो, कोई सुन ही नहीं रहा है आपको, क्योंकि मैं तो एडल्ट वर्ल्ड में जल्दी आ गया, तो मैंने और ज़्यादा वो फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस और नॉट मैटरिंग एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड. तो मैं तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के लिए एफिडेविट बनाना होता था तो मैंने ड्राफ्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी 14-15 में. एफिडेविट बनाया किसी के लिए 100 रुपये का 150 रुपये कमा लिए, उसको अटेस्ट करने के लिए आप लाइन में खड़े हुए, वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो आप छोटे हैं, आप कौन है, कोई वजूद नहीं है आपका. तो वहां पर लगता है यार ये लॉ से मैं भी इक्वल हूँ, लॉ से मैं भी किसी से भी वो कर सकता हूँ. तो आई मैटर और एवरीवन मैटर्स, एवरीवन हैज अ वॉइस. तो लॉ बड़ा उसको फैसिलिटेट करता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ इन अ लॉट ऑफ वेज. And whichever side you are on, as we get into it, as a lawyer or as a judge, how you can use it in creative ways. There are these big 5 traits. एक personality assessment है, right? Are you aware of it? No. जहाँ पे it is जहाँ पे disagreeableness एक बहुत बड़ा parameter है. Of like एक तो extroversion, conscientiousness, कितने hardworking हो आप, and there are degrees, right? Like you could have degrees of yeah. There's a percentile to it. तो आप यही है, मतलब न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन और 3-4 पैरामीटर्स, एंड उसमें एक सब आता है डिसएग्रीएबलनेस. एंड द मोर पीपल the conversations going on, yeah. If you're very high on disagreeableness, yes, people tend to be lawyers or professions and that's a very good reflection of sort of where you are. And guess my disagreeableness on the percentile. Take a guess. Is your disagreeableness on the spectrum? Yeah, on the spectrum. And like there's a percentile. Like 1 to 100 percentile. Like if there are 100 people... You've been very agreeable so far. And I don't like it to be that way. I'm not hazarding a guess. You tell me. It was 98% disagreeable. Like if there are 100 people, I would only agree to 2 people in the room. And I would disagree with 98 people. And that is... Did you have friends in life? Yeah, I have very close friends. 13 years. Boring school friendships are still blooming. Apparently, my flatmate, who had just gone to Merchant Navy, is my lifelong. For 13 years, we've been together. पर वो चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की कि ओके, बिकॉज आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाई एम आई सो लाइक हर चीज़ का आंसर देना है, क्यों बोलना है, अरे यहाँ तो चुप एज अ किड कि डेविल्स एडवोकेट प्ले करना है कि अच्छा ये भी है, अच्छा जी ये भी है. और when I took that test, I realized कि हाँ, okay, this is who I am. I like to do it, but now I have to understand at places. Now I'm very agreeable. I'm a very good listener. Like I love to absorb. I'm a learner too. पर जैसे आपको ये सब understanding होती ना, you are able to utilize those tools in your life and be a better person, I think. And that really is interesting and changed me in a lot of ways. When you were a kid, how disagreeable were you? And as to now? And especially with close friends, like वहाँ पे जैसे close friends or family, whoever, like in close circle, क्योंकि बाहर तो disagreeable होना ही as a profession, like that requires not disagreeable but to be argumentative, to form opinions, to put it out there. But कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार ये lawyerish चीज़ें अब नहीं, बस ये कोर्ट तक ही है. How often that happens? So starting off as a kid, I think I was very, very disagreeable. I was hardly the most popular kid. In fact, it came to a point that many people would not want to play with me because I'd just be very, very rigid, stubborn. I'd want to argue everything, not take everything lying down. I wasn't easygoing at all. My sister would have a lot of friends. So वो सब लोग आएंगे, they'd knock at the door. I'll answer the door. The kids would say, Neha, my sister, वो घर पे है. मैं क्या काम है? कहते खेलने जाना है. सर, I'm also a kid, right? मतलब खेलने जाना है तो मैं भी जा सकता हूँ खेलने, मुझे भी खेलना पसंद है. I'm younger than her, but they wouldn't want to. It's not that I didn't have friends, but I could see that about myself, reflecting. And I was always in the right. I thought कुछ गलत तो मैं तो गलत कह ही नहीं सकता, मैं तो लड़ भी रहा हूँ तो ठीक बात के लिए लड़ रहा हूँ. Everyone should support me. In fact, look at me like a hero fighting for the right causes as a kid. But that's not how people look at it. So this with friends, also with parents, questioning everything. Hardly the easiest kid to have around.
at some point, I'm sure my parents contemplated giving me up for adoption, or just not having me around. But and some people would say I'm still very bad. But as I went along, I realized that not everything is an argument to be won. Obviously, in a court of law or a situation or a case, you want to test it. You want to test it on logic. You want to test it on evidence. You want to tell people that if they are making a claim, they better get the evidence and evidence of a particular character. Criminal law है तो beyond reasonable doubt आप prove करो. तो ये principles आ ही जाते हैं अपनी life में भी spill over हो जाते हैं. But then you realize at some point it's not just human beings at the end of the day. Everything is not a logical fight to be won on logic, right? So वो मैंने थोड़ा सा minimize किया है, become more accepting of opinions and different opinions, different perspectives. And I think as you go along, as you grow older, you become less and less certain of what you think you know, right? As Oscar Wilde said, again, one of my favorite authors, he said, I'm not young enough to know everything now. I'm not young enough to know everything now at 34. I was far, far more certain when I was 23 and far, far more certain when I was 14 and 15. So it's gradually progressive discovery of your own ignorance in that sense. So now I think I hope so. I'm much less disagreeable. Professional side पे तो देखो disagreeable होना थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हर कोई agree ही कर जाए तो we would not arrive at the truth ना. Arriving at the truth also is a process of, as if you put it in dialectical materialism, maybe as a thesis and antithesis and then in synthesis emerges, right? So कोई व्यू पॉइंट आता है, आप उसको कंटेस्ट करते हैं फैक्ट्स और एविडेंस पे, तो उसी से तो कुछ मंथन होता है, कोई सच निकलता है, राइट? तो वो प्रोसेस भी बहुत जरूरी है. तो कोर्ट का भी प्रोसेस डायरेक्टिकल प्रोसेस ही होता है ना. प्रोसिक्यूशन कुछ कहता है, डिफेंस कुछ लेके आता है, एंड द जज इज सपोज टू फाइंड आउट दैट beautiful truth or at least endeavor in that direction. So professional hazard ही है हमारा to be disagreeable, and if you're too agreeable, then you're not possibly doing your job, as a counsel. But the best part is we can disagree in the court, but without being disagreeable. I think that's somebody said this in the context of marriage. The recipe for a good marriage is disagreeing, or the ability to disagree without being disagreeable. So it's not become a part of you कि यार हर चीज को आप कंटेस्ट ही करते हो, आप बस लड़ना ही चाहते हो हर बात पे, आपको जीतना ही है किसी भी कॉस्ट पे. वो बात नहीं. डिसएग्रीमेंट होगा, उसको एक्सप्रेस करेंगे, रैशनली करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिवली कोई इंसान कर सकता है उतना ऑब्जेक्टिवली करेंगे, और उस प्रोसेस से कुछ अच्छा निकलता है. बट एट द सेम टाइम you know what the rules of the game are, and you'll play it accordingly. But that is funny thing about emotions in general, no? Like we try to rationalize and be objective about emotions, but they're not at a lot of places. And do you think our fraternity in general, like we're very objective people, like we try to measure objectivity a lot. और अभी आप कुछ टाइम पहले बुक्स की बातें कर रहे थे कि कैसे आप अगर नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो थोड़े टाइम बाद यू नीड पोएटिसिज्म, थोड़ा सा फिक्शन की तरफ आप डेविएट होते हो. कितना इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को इक्वली, इट्स लाइक अ वेल फाइंड, या फिर एक डांस ऑफ जहाँ पे दोनों लोग सिंक्रोनाइज्ड है, नॉट लाइक थोड़ा सा जो ऑफ बीट हम डांस करते नहीं, बट लाइक अ बैले ऑफ अ ब्यूटिफुल सॉर्ट. Beautifully put, actually. It is both. It has to be both. Sometimes your reason, as somebody said, is the slave of your passions. पैशन कोई चीज़ डिक्टेट कर रहा है, या इम्पल्स डिक्टेट कर रहा है, या आपका अगर फ्रॉइडियन टर्म्स से बात करें ईड डिक्टेट कर रहा है कि एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, इमोशन है, उसको आप जस्टिफाई करने के लिए कोई रीजनिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर ले, तो वो एक तरीका है. बट आई थिंक दे बोथ एक्ट एज काउंटर वेट्स टू ईच अदर इन अ लॉट ऑफ वेज, राइट? कई बार योर इमोशनल इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, योर गट as you call it, may lead you to the right conclusion. But mostly not, as judgeship has taught me, your initial assumptions may be horribly and terribly wrong. आपको लगता है वो मेरे सामने खड़ा है, वो जमानत की गुहार लगा रहा है, वो बता रहा है मैं इस तरह के परिवार से आता हूँ, मेरे को गलत फंसाया गया है. Sometimes, when somebody who's very good at rhetoric can make that plea to you, a passion plea by a good advocate who's a good orator, it can move you. But then that's where your training as a judge comes in, and you take a step back here, rhetoric aside. Facts क्या है, evidence क्या है, probabilities क्या है इस केस की, तो वो भी rationality आपकी आ जाती है. You do not let the emotion take the better of you. At the same time, becoming totally a machine
a rational machine or a machine of objectivity is also problematic because that takes away the humanity from the equation. फिर एक फाइल हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक फाइल ही बन जाए, एक मुकदमा एक फाइल बन जाए, यानी भी डिस्पोजल है, मुकदमा है, डिस्पोज ऑफ करना है, वो एक इंसान की जिंदगी भी है. So it's always a tussle between these two things now. Daniel Kahneman ने भी बोला system 1, system 2, impulse versus your thinking, rational brain, slow brain coming in and trying to check that. It's always, as you said, it's a dance of the two. Lawyers and judges tend to lean in favor of the rationality part of it, Right. the objectivity part of it. Because emotion तो client के पास है ही. इनफैक्ट क्लाइंट आपके पास इमोशन और वो गुहारी लेके आता है या लिटिगेट वही लेके आता है. आपको टेस्ट करना है उसको और आपको बताना है कई बार ही मे बी फीलिंग दैट ही इज रॉन्ग्ड बट ही इज नॉट रॉन्ग्ड. जो उसके साथ हुआ है वो डिजर्व करता है. तो ये आप उसको बताएंगे आफ्टर टेकिंग अ स्टेप बैक एंड दैट क्लिनिकल डिटैचमेंट, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब्लम हेल्प्स यू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव. बिकॉज इफ यू बिकम द प्रॉब्लम योरसेल्फ, आप भी इन्वॉल्व हो गए, आप साथ में ही उसके यू शेड अ फ्यू टीयर्स, Right. that's not going to help you as a judge or a lawyer or in fact as a human being. Why confine it only to law? You know, and I think overall for decision making and leading a more happier life, because emotions, let's talk about happiness maybe then. Emotions can lead you astray. Right. An emotional response to a situation may not be the correct response. You'll regret it later, whether it's a fight or breaking of a friendship. But when you take a step back in the giantness of things of what a friend has done to you, we're talking about friendship, or what a friend has done to you over the last 10 years, then you'll take a more, a better view on it. Not the thing that the friend has said now, or the party that you did not show up at. So it helps in human relationships, decision making. That's why I think great speakers and orators or great people always they have more seconds to think, you know, like जैसे 2-3 से. I was reading Instagram पे आपने Elon Musk पे कुछ post किया था. You were reading Elon Musk का है ना biography by somebody. And how he speaks, have you seen, like he would at times take 10-second pause, just like absolute pin drop silence, and then he is, you know, thinking, and then And you he can says, even hear the wheels turning. yeah, exactly. Even Obama is somebody who used to be very deliberative. And they sometimes speaks with the sentimentality or of a writer. You know, writer is more precise as opposed to oral speech. So yeah. 23 years पे जज बनना बहुत ही यंग एज नहीं है, जहाँ पे हम खुद ही, जैसे आप बोले थे, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करना, इमोशनल साइड ऑफ अ पर्सन और एक रैशनल अप्रोच लेके आना. एंड लाइक वी डिस्कसिंग ऐसे कि 25 years तक तो इंसान साइकोलॉजी के हिसाब से वैसे भी ही इज़ नॉट कंप्लीटेड, नो, इन हिज थिंकिंग इन लॉट ऑफ वेज. हाउ डज बीइंग अ जज एंड ऑब्जर्विंग योर बायसेस गो इनटू दैट थिंग? मतलब हम क्या, वो जो जजशिप की ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब एट लेंस बताया जाता है कि ये एंकरिंग बायस है, ये यू नो कन्फर्मेशन बायस है, और ये सब कितने ज़्यादा बायसेस नहीं होते इनहेरेंट इंसान में? So at 23 again, I don't know if one should be a judge at 23. I had the great fortune of being one. अब progressively बहुत young judges आ भी रहे हैं system में. After a LLB degree, you can study, sit for the exam and become a judge. Training is helpful in a lot of ways. I've been through that training myself, and then I've had the occasion of training other judges across the country. ट्रेनिंग में आप में ड्रिल तो किया जाता है कि बी वेरी वेरी सस्पिशियस ऑफ योर इनिशियल प्रिजम्पशंस एंड असम्पशंस एंड योर इनिशियल इंप्रेशन ऑफ अ सिचुएशन. और क्योंकि जज और लॉयर की ट्रेनिंग ही होती है कि आपको एविडेंस पे एक्ट करना है, तो वो हेल्प करता है थोड़ा, मे बी एज अपोज टू समबडी एल्स इन सम अदर डिसिप्लिन. इट्स अ वेरी एविडेंस बेस्ड प्रोफेशन ना. कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, हम पहला सवाल क्या पूछते हैं? एविडेंस क्या है इस बात का? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस क्या है? कितने विटनेसेस हैं? वो विटनेसेस कितने क्रेडिबल हैं? आप ये क्लेम कर रहे हो तो आप प्रूव करोगे, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है. और बर्डन ऑफ प्रूफ भी जितना ग्रेव आप एलिगेशन लगाते हो, द ग्रेवर इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑल्सो. आप एविडेंस लाइंग, राइट? तो लॉयरिंग अपने आप में भी ये सिखाती है, और लॉ की पढ़ाई सिखाती है. जजेस को और ज़्यादा ड्रिल किया जाता है उनमें अकेडमी में. इतना स्पेसिफिक में इन सब बायसेस के बारे में नहीं बात होती जितनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि एंकरिंग बायस क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर कुछ है तो उससे आप इम्पैक्ट हो जाएंगे, या फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, या एडोमिनम है कि इंसान को कॉज से डिसोसिएट करके देखें, इंसिडेंट से डिसोसिएट करके देखें. बेशक क्रिमिनल हिस्ट्री रही हो, बट हो सकता है ये ऑफेंस उसने बिल्कुल ना किया हो. ही मे बी अ टेरेबल पर्सन, बट यू आर नॉट अ जज ऑफ द पर्सन ना, यू आर जज ऑफ द एक्ट, कि उस सिचुएशन पे उसने मर्डर किया कि नहीं किया. बहुत सारे किए हो पहले या नहीं किए हो, दैट्स इममटेरियल फॉर यू. Again, I would want to come back to your Instagram post, जहाँ पे आपने एक पोस्ट डाला था तिहाड़ जेल का
कुछ उन्होंने लाइक पोस्टर या था कुछ लगाया हुआ था एंड आपने कैप्शन नीचे लिखा हुआ था कि ऑल सेंट्स हैव अ पास्ट एंड Every sinner has a future. right. So it is the same thing, no? Like you don't have to reflect back and you have to think that they have a future. एक अब उसका काउंटर पॉइंट आ रहा है इंटरनेशनली कि प्रोबेबिलिटीज को अगर आप मेजर करेंगे तो somebody who's been involved in a series of offenses in the past तो प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, बट हमारा लॉ उसको परमिट नहीं करता टू कीप दोज प्रोबेबिलिटीज इन माइंड. इन फैक्ट इफ यू लुक एट द एविडेंस एक्ट, डोंट वांट टू बी टू टेक्निकल, बट एविडेंस एक्ट कहता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर एविडेंस आप लेके ही नहीं आ सकते क्रिमिनल मुकदमे में, क्योंकि बैड कैरेक्टर एविडेंस वट एवर दैट मीन्स बायस कर देती है जज को अगेंस्ट द पर्सन. तो ये तो है ही, एंड लॉ का एंड भी रेफॉर्मेशन है, एज यू सेड. You know, every person is more than the worst thing they've done. You know, people who we judge people, it's an enormous privilege. But the kind of things that all of us have done, but just because possibly we came from privilege, somebody looked the other way, or we didn't have to, you know, suffer the consequences of that act. कोई हो सकता है वो इतना similarly placed ना हो, वो इतनी privilege से ना आता हो, और वो इस situation में चला गया. तो people deserve a second chance. And that's something very important for a judge or a lawyer to appreciate, you know, as a matter of human rights, as a matter of constitution. I was working at Dalsa, ये गौतम बुद्ध नगर में, और internship थी. They took us to jail, जो यहाँ का ग्रेटर नोएडा में जेल था, और वहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे पे योगा करना था. But the feeling of getting into a jail, getting that stamp, छोटा सा दरवाज़ा, that's also very changing if you think about it in a lot of ways. You are with prison inmates, आप बैठे हुए हो, और मुझे तो लगता है जो ये थॉट रेफॉर्मेशन का मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वहाँ सीमेंट हुआ. जब आप करवा रहे हो चीज़ें, आप वहाँ पे हो और आप लोगों को देखते हो, it moves you. Like हाँ यार, मतलब वो भी they deserve to be out when they've done their due diligence. They deserve to breathe the fresh air, walk freely if you know things are right. That was very reformative for me, like being there. When you look at that cell now, जिसमें रखा जाता है इनमेट को, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी होता है कई केसेस में, तो उस सेल को जब आप देखते हैं तो इट्स यू वेरी डिफरेंटली. एंड देन एंड जजेस आर टेकन देयर, यू नो, ऑब्वियसली दे डोंट स्पेंड टाइम देयर, आर टेकन देयर टू विजिट. ऑब्वियसली विजिटिंग एज अ विजिटर इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ थिंग्स आर. बड़ा ही आपको पॉलिश्ड व्यू मिलता है ऑन द जेल लाइफ. योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही है, लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको. Reality is obviously more grim than that. But having that exposure makes you more sensitive when you are taking that decision to send somebody to jail. आपको 18 साल के बच्चे को when you are sending him for 2 days to the judicial custody, it makes you feel the immense responsibility that comes with it. Because it's not easy. And striking that balance on that person's rights versus the society's rights, and you know, judgeship always comes down to a balancing the scales. Is difficult. I had to come back to the initial point on 23 years old. I think training helps a lot, but we'll all learn as we go along. Right. And what made you quit being a judge? Like, what was the switch? कि अब अंदर का journalist कुछ बोल रहा है कुछ और करने के लिए. What was it? A number of things actually. क्योंकि फादर साहब मैंने बताया लॉयर थे. मेरा भी जो इनिशियल एक्सपोजर रहा फ्रॉम लॉयर्स परस्पेक्टिव से ही रहा. आर्ग्यूमेंटेटिव में था ही. And more than argumentative, I liked to plead a case and, you know, convince somebody, be persuasive. Molding somebody's will is something that I really took on as a challenge, and it excited me. कि कैसे आप किसी को you can get them to believe in your side and see the world as you do. तो वो that's not what a judge does. Judge writes, judge pronounces, judge तो decide करता है. Judge नहीं persuade करता किसी को. वो judgment अपने आप में जो judgment होती है वो judgment कहती है. लॉयरिंग का चैलेंज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता था और ज़्यादा इंगेजिंग लगता था. इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट भी आया था जुडिशियल सर्विसेज का, मुझे अभी भी याद है, मैं हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मैटर आर्ग्यू कर रहा था एज अ 21.5 year old. 23 is when I joined, 21 is when... एक साल की ट्रेनिंग वगैरह. So 21.5 I cleared. I was a lawyer and I was in two minds. But it was better to join or not. Because first of all, what was the reaction? Rank one? So actually, I was arguing a case in a court of law. How the news broke to me. मैं केस आर्ग्यू कर रहा था हाई कोर्ट में, और उसमें वहाँ पे जब मैंने आर्ग्यू कर लिया तो the bench asked me, are you the same Bharat who's written the exam?
एंड क्योंकि रिजल्ट बहुत टाइम बाद आया था मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, तो ऑफ कोर्स यस 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 आई हैव रिटन द एग्जाम एंड द रिजल्ट्स आर अवेटेड. So I got that signal from the bench that now you, because the results were declared the same day. They were being put out as I was arguing a case and I was on my legs. तो वो मेरे को पता लगा कि हाँ I cleared the exam. Then obviously. What a way to come to the news, like so the bench fulfilling. breaking it. Right. And the judge then of course started testing me on law. We've obviously he's cleared the exam, he stopped the exam, and now he's standing here as a lawyer. Let me test him more. तो वो back and forth भी उस समय हुआ. तो बहुत अच्छा लगा of course. It's थोड़े आप young होते हो ना, तो थोड़ा सा you also see yourself in the light of others and how you're reflected in the eyes of others. वो obviously थोड़ी चीज़ कम हो जाती है as you go along. तो उस समय तो of course in your peers, the respect in your peers. Competitive exam है, मुझे याद है कोई 29-30 लोगों का हमारा बैच था और 20,000 लोगों ने पेपर दिया होगा रफली. तो लोग कहते थे दिस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज इज लाइक यूपीएससी और योर स्टाफ और समथिंग. सो you obviously are proud of yourself and you're looking forward to it. It's an enormous privilege to be able to become a judge saab at 23, decide people's fates. लोग अपने decision नहीं लेते, आप लोगों के भी decision लोगे, उनकी fates आप decide करोगे. There's some amount of megalomania also there, but I looked at it as an opportunity to do a lot of good. Like कुछ अच्छा करेंगे, we're part of the solution. It's very Sarfarosh type of a movement. Right. Where you say कि it sends a shiver down your spine, कि हम टाइम आ गया है कि कुछ अब हम नहीं ऐसे करेंगे जैसे पहले होता था, हम कुछ अलग करेंगे. और so with that Bharat Singh sort of a ideology, I got into the system. बड़ा अच्छा रहा. I read this quote, Mr. Bharat, that the magic is in the work you've been avoiding. And that really changed me, because I was also thinking, let's not prepare well for the interview. Like, no, overcompensate, come preparing. पर exactly, magic जो हम ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में वही है जो हम काम avoid कर रहे हैं. And being a law graduate, जब आप निकलते हो, अब मेरे साथ क्या हुआ, I was from a COVID batch, तो मूटिंग के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, सारा कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था. एंड आई मिस द की प्रोसेसेस ऑफ थिंग्स जो was very important, है ना. In that experience of being in an online batch, I came along with friends and I realized कि inherently वो conversation उठ के आ जाती है ना, first generation lawyer or people who have family and friends in the law fraternity. How does a first generation lawyer, और उससे पहले एक प्रिकर्सर है, मुझे लगता है जिन्होंने जस्ट शुरू किया होता है उनका डिसएडवांटेज सोशल वैल्यू और करेंसी नहीं है, बट दे डोंट रियली नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स और थिंकिंग वे में, और वर्बल प्राउस मिसिंग आउट है, क्योंकि वो आप बहुत जल्दी पिक कर लेते हो अपने पेरेंट्स को देख के कि वो कर रहे हैं ऐसा, सो यू बिकम बेटर एट मे बी फॉर्मिंग एन आर्ग्यूमेंट या थिंकिंग या जो भी है. हाउ डज people change that, and what are actionable things which they can do right now जो कॉलेज में है और 3 साल या 5 साल के उस span में they can change it? These are the things that you can work on personally on an individual level. Social capital, social currency is in fact the more difficult part of it, because that's something you can't help with. The family that you're born in, the connections that you're born with, usually is not something you can change. Of course you can build it as you go along. The starting point हो सकता है आपका different हो with compared to somebody who's got those connections, but you can overcome that. Obviously the arc of a lawyer's life is long and it would take some time, so that's the more difficult part actually. The part of being more articulate, having a way with words, having methodical ways of thinking and structured ways of thinking, and being able to tell a good story and conveying your points and doing it well is something you can work on actually. Obviously, some of it you pick from your influences. Your parents are your first teachers, but it can be worked on. And now I think the avenues are much easier to be learning a skill. You can have a conversation with the best minds in the world sitting in the comfort of your home. So it's much easier. Earlier, some people would have access to intellectual capital or intellectual inputs. Only some people would have it. No, that's exactly what I'm doing, having the conversation. I was hoping you'd say that. You can come the queue. So now, obviously, knowledge has been democratized to a great extent, right? Podcasts, you've got videos, you've got reading material,
You got master classes on the internet, the best people in the world coming and speaking to you on speaking or TED Talks, bunch of things that you have access to now. This is an investment that you make in yourself. And this is the part that sometimes a young lawyer or a young law graduate neglects. But this is the part that's most important. A young lawyer is in the business of selling what they say. As I say, your words are your stock in trade. You're not selling any other good or service. You're selling the way you analyze an issue, the way you strategize, the way you connect the dots, the way you put it out in a methodical way is what you are selling essentially. So what you're selling essentially is your brain and your silver tongue and your gift of gab, right? People don't work enough in that direction. Sometimes the focus is to read as many laws as you can, mug up facts and provisions and section numbers. Those are important too. A lawyer has to have a elephantine memory, in order to be really, really successful. You need to remember things. But these softer skills are also very important. And if you are, and ultimately, if you're not born in a lawyer's family, what you can't cure, you must endure, right? You need to work on it. And I see some people do that beautifully. Some people overcompensate for that lack of learning and do it and come out even better. Some of the best lawyers that we've had in the business are first generation lawyers, right? Right. So, अब सवाल ये है कि आप do you take it as a disadvantage and then you sit back and think, yeah, what do? I have no chance? Or do you take that adversity as an opportunity and say, यार मुझे अब दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी है और वो मैं करूँगा and I'll be better. And that's the beauty, na? What's the fun doing an easy thing? As you become a lawyer, you increasingly take on more complex cases. तो आपका winning ratio भी कम होता है. So Mr. Jethmalani would lose a majority of his cases. Why? Because he'll get the toughest, no? I see. He'll get the most complex, where people have given up hope otherwise. They come to him or they come to an expert. So it would get increasingly more difficult and increasingly more easy because everything is difficult before it is easy. You make it easy by your efforts. So वो efforts तो डालने ही है. That's the beauty also of it. That constant being on your toes and sharpening your intellect and sharpening your craft as a lawyer. I think you very well put कि अपने आप को refine तो करना ही है. And this is also a game. It's not game against people, no, but you're also playing a game against you of bettering, improving, moving ahead. आपने बोला राम जेठमलानी जी का कि वो केसेस मोस्ट डिफिकल्ट केसेस पिक करते हैं. जैसे डॉक्टर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो उनका मोर्टेलिटी रेट दे वुड बी वेरी केयरफुल, नहीं कि नहीं वो हिलना नहीं चाहिए. लॉयर्स आर दे वेरी ओपन कि नहीं ठीक है, मतलब अपना विनिंग रेशियो हमें हिलाना नहीं है. हाउ डज दैट गो? That's a interesting question. Lawyers normally नहीं देखते उस perspective से. Most lawyers that I know. इसलिए नहीं देखते. Number one, there is no centrally maintained database of how many cases you won or lost. Number one. Second is that people also understand that you lost at the trial court, you lost at the high court. Supreme Court is your last chance. 3 courts have ruled against you already. They don't believe in your case. So people understand that even if you lose at the Supreme Court level, it was a difficult hand that you were handed and you cannot pull a rabbit out of the hat. You did your best and that's fine. I think that's how at least most lawyers that I know think. That's how I would think. If you turn down a difficult brief just because it is difficult and there is an imminent defeat, then I don't think you're doing your job as a lawyer. Because ultimately that's not how you decide you take up cases. You take up a case because you believe in it. You have the skill set for it. You can add value to it. So these are the considerations that you take up cases on. And as I said again, what's the fun doing easy cases? In fact, I keep telling my juniors that if you're winning, then you are not taking up adequately difficult cases, or you are not going up against difficult judges and difficult opponents because you're winning. You're just simply winning. And you also become complacent with winning now. Right. So every now and then, a defeat makes you go back to the drawing board again, right, and be better at your craft. आपने मेंशन किया ट्रायल कोर्ट का और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें जाती हैं. यू लॉस्ट एट सुप्रीम कोर्ट, पीपल लुक एट इट. एक ग्रोइंग कंसर्न कि अपील बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. मतलब अब जो केसेस बहुत नीचे लेवल पे सॉल्व हो जाना चाहिए, लाइक पीपल आर गोइंग दिस अपीलिंग एंड मूविंग अहेड. व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? लाइक इज इट राइट, और should there be a little more decisiveness at the trial, at the lower courts, no? See, appeals are important and they are there for a reason. I don't agree with the fact कि बहुत ज़्यादा appeals है हमारे system में.
अपील्स उतनी ही है जितनी होनी चाहिए. और अपील्स होनी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कोई भी इंसान गलती कर सकता है. जजेस भी आफ्टर ऑल इंसान है. So since they're human and they're prone to error, you need to have appeals. You need to have a second appeal also in some cases. For example, in a death penalty case, even if you have 3 rungs of appeal, it's important to have them because there is a life at stake. If 2 judges have got it wrong, doesn't mean the person should be hanged. There may be a third appeal also. The key is in being able to decide those appeals in a time-bound manner. That is where we are failing. Problem appeal का होना नहीं है. Problem ये है कि हम उस appeal को decide नहीं कर पाते हैं सालों साल. और वो एक फंक्शन इस चीज़ का है कि हमारे पास एडिक्वेट जजेस नहीं है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो अपील होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू वुड बी सरप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी पीपल गेट अ डेथ पेनल्टी फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट एंड दैट पेनल्टी इज अपहेल्ड बाय द हाई कोर्ट, बट देन इट गेट्स कम्यूटेड एंड रिलैक्स एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल. इमेजिन जजेस disagreeing on whether he should get death or not. And mind you, they are not just disagreeing on whether he should get death or life. सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक्विट किया है लोगों को जिनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और डेथ सेंटेंस दिया था. So it's not only I'm reducing the punishment, I'm finding him innocent today as the Supreme Court. And that itself shows how important these appeals are. No, you're absolutely right. I mean, जो timely उसका कोर्ट का number of days कम हुआ, timely execution is what I really wanted. But you're right कि अगर death penalties वगैरह हो रही हैं और acquit हो रहे हैं जाके later stages पे, of course ऐसा ही नहीं कि grave ignorance हो जाए of justice, that I don't think so we'd want. Mr. Bharat, I think we've come to, the concluding part of the podcast, though I don't want it, but it is how it is. If there's one advice you would want to give to a budding or aspiring law student or an aspirant, what would it be? I think the most important is to be at it. I see a lot of young people, I feel extremely old myself when I say young people. But because of the accomplishments you've had, so that maybe really just one because I'm reason. 34, maybe just that. I think to be at it, to just have some patience at least. In law, things are not going to happen overnight. A blockbuster overnight success is not a law thing. You may do a very good case and have a celebrity case and be in the news. It may happen to you, but again, law requires commitment, law requires a devotion, law requires a tapasya जो बहुत लंबी है. Overnight नहीं होता, because आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी लेके आते हैं जब आप किसी केस को आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो वो टाइम से ही आएंगी चीज़ें. कुछ लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है. So don't expect it to happen overnight to you. When looking at success at law, somebody said it's a marathon, it's not a 100-meter sprint. ये मैराथन है. और जितना आपकी जर्नी इतनी लंबी है लिटिगेशन में, एटलीस्ट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लिटिगेटिंग लॉयर्स इन दैट सेंस, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है, आप कितना अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो रीड एज मच एज यू कैन. आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग. एंड कम इन टू लॉ ओनली इफ यू लव रीडिंग, बिकॉज द बेस्ट पीपल इन द बिजनेस आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविड वोरेशियस रीडर्स. रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ तो हमने पढ़ना ही होता है, यू नो हाउ लॉन्ग जजमेंट्स आर, commentaries and everything, but also please make it a point to read outside of law. This is going to shape your personality. This is going to give you a voice. This is also give you an opinion, and it would give you an opinion that's well founded. Opinion बनाना तो बड़ा आसान है, but well informed opinion आपका बनेगा अगर आप law से बाहर भी चीज़ें पढ़ेंगे. और यही सब craft, यही दुनिया की अंडरस्टैंडिंग, यही लोगों की समझ, यही सर्कमस्टांसिस की समझ, यही वेरियस डिसिप्लिन्स की समझ आपको एक बेहतर लॉयर बनाती है. इट मेक्स यू अ मोर a sharper and a more knowledgeable lawyer. You are in the space of knowledge. The whole profession is premised on आपको कुछ पता है जो सामने वाले को नहीं पता. That's, आप कुछ जानते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे या फैक्चुअल लेवल पे या लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जो सामने वाले को नहीं मालूम. एंड दिस इज हाउ यू ऐड वैल्यू टू अ केस ना. जब सभी कुछ नॉलेज में बेस्ड है, देन व्हाई नॉट रीड मोर? That's actually the problem today, that with attention spans. It's shorter and shorter attention spans where we are not in a position, or we are not able to sit with a book and वो 1 घंटा 2 घंटा आप उस book के साथ नहीं spend कर पाते. I think that's something that needs to change. In fact, I'm going to note down your reading list and might brush up my reading. Thank you so much. It was lovely speaking to you. Probably hands down, this is one of my favorite podcasts. Thank you for coming. Thank you so much for time. Thank you.